and that I want to share with about it and the other streams. I kind of wanted to do a lot of jokes on PCM, but then I realized there is no bigger joke than PCM. इंडिया में कुछ गलतियां लोग सिर्फ एक बार करते हैं. पड़ोस की आंटी को मार्क्स बताना, सड़क के कुत्ते के पास जाना और 10th में 9 CGPA से ऊपर जाके PCM ले लेना. लोग PCM लेते हैं, फिर PCM उनके लेता है. You know the real reason why Chetan Bhagat wrote his book, The 3 Mistakes of My Life? PCM. Let's move on to PCM's richer and more pampered cousin, PCB. Biology is so weird, man. It's the only subject where multiplication and division mean the same thing. PCB वाले are so immersed in their subject कि आप उनसे पूछो कि what are the 3 things that make you happy? They'll say serotonin, dopamine and oxytocin. PCB वाले are so immersed in the subject that the only joint they know are ये वाले. They are so immersed in the subject कि अगर कोई आंटी उनसे पूछे बेटा घर में सब ठीक है ना, दिल से एंटीसेप्टिक है. क्या आंटी सब ठीक है? कॉमर्स वालों को लगता है कि उनकी लाइफ बहुत सेट है, कुछ नहीं हुआ तो लॉ कर लेंगे. वो लोग लॉ करने निकलते हैं, उनका लॉल हो जाता है. इन इंडिया वन थिंग इज फिक्स्ड. इट्स नॉट IPL, बट जब तक सूरज चांद रहेगा ह्यूमैनिटी स्ट्रीम बदनाम रहेगा. देयर इज दिस ह्यूज स्टीरियोटाइप कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उनको ह्यूमैनिटीज लेना पड़ता है. When I told my father that I wanted to take humanities, he said, बेटा न्यूज़पेपर बेचने के लिए तेरे को डिग्री नहीं चाहिए. And that was very offensive. But I have a friend, his name is Sanjog. And then he took humanities, and then he became the vice head boy of the student council. So which proves smart and knowledgeable people can take humanities too. But फिर संजोग ने पूछा टुमारो लाइन क्या होता है, तो मेरा फेथ फिर से घूम गया. Please try to remember that these are all jokes and I meant no offense, and all streams are equal and important. Exactly the reason why you needed 80% for PCM and 55% for humanities. So 20s. No 20s. You have your boards right now. They're about to come, right? So, like I know everybody must be very depressed. But I am because मेरे आ रहे हैं ना. I was going through a bunch of motivational quotes. So one of them was, if a lot of people are hating on you, then you're probably doing it right. अब ये सुन के ISIS मत join कर लेना. Another quote is from Abraham Lincoln. He said this about college. पहले उम्मीद खत्म होती है, फिर इंसान खत्म होता है और फिर सेमेस्टर खत्म होता है. मॉम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब कॉलेज के टाइम. लाइक खाना खाते वक्त अगर आप उनसे पूछो मॉम कैन यू पास मी द सॉल्ट, कैन यू पास दिस सेमेस्टर. Honestly, you won't know how Jon Snow felt like until you join college. This is a joke I used to test the IQ of the audience. College spelled backwards is Edgelock, which makes no sense, right? Just like everything you're going to study there. Thank you. Bye.